Okay, so let's see the characters of Pride and Prejudice, and which is a novel written by Jane Austen. Okay, so there are so many characters in it, and it will definitely create problem. It will definitely create confusion. So it is very important कि पहले आपको characters clear हो, and then after we'll go through the summary. So basically ये video characters के लिए ही होगा. Okay, and soon I'll make a video जो summary पे based होगा. Completely उसमें summary होगी. Okay, so yeah. Let's start. So, yeah. Mr. and Mrs. Bannett. So, who are Mr. and Mrs. Bannett? Mr. and Mrs. Bannett are from Bannett family. They are couple, and they are in short they are a parent of 5 growing daughters. ये 5 daughters के parents होते हैं. And अगर आप character देखें Mr. Bannett का, so Mr. Bannett is a kind of person जो बहुत ही ज़्यादा intelligent है, who's a gentleman, who's sensible, also educated भी है. ओके वेर इज मिसिज बैनेट इनके कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं. शी इज़ अ फुलिश एंड शी इज़ अ फ्रिवोलिस वुमन. ऑल्सो ये अनएजुकेटेड हैं एंड द ओनली एम ऑफ अ लाइफ लाइक द ओनली एम ऑफ मिसिज बैनेट्स लाइफ इज़ टू फाइंड आउट अ वेल्दी मैच फॉर हर डॉटर. ओके, इनका ओनली एम क्या होता है लाइफ का? अपनी 5 बेटियों के लिए एक वेल्दी मैच फाइंड आउट करना. ठीक है, सो या लेट्स सी द डॉटर्स. ओके, Jane Bannett, Elizabeth Bannett, Mary Bannett, Catherine Bannett, and the last one is Lydia Bannett. So basically sequence भी यही है. Jane is the oldest one, Elizabeth is the second oldest one, Mary third one, Catherine, and the last one is Lydia Bannett. Okay, and the story like the novel Pride and Prejudice is somehow and somewhere revolves around Elizabeth Bannett. So basically आप बोल सकते हो she is the protagonist of the story. Okay, so if you want to see an overview, so yeah, here. So basically ये बैनेट फैमिली के बारे में है जो कि लॉन्गबोर्न नाम की जगह में रहते हैं. ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ बिंगले फैमिली. ओके, सो बिंगले का स्पेलिंग है Bingley. आई एम सो सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक हियर. सो बेसिकली ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ बिंगले फैमिली जिसमें कि मिस्टर बिंगले हैं, इनकी 2 सिस्टर्स हैं. वन इज़ मैरिड, अनदर वन इज़ अनमैरिड. ओके, जो कि रिसेंटली लंदन से अभी नीदरफील्ड पार्क नाम की जगह पे शिफ्ट हुए हैं. ओके, एंड दे आर एरिस्टोक्रेट, दे आर रिच, एंड या लेट्स सी हर सिस्टर्स. सो Carolyn Bingley. Bingley's youngest sister. She's a superficial and selfish girl. So basically she is a selfish girl and she is the youngest one. इनकी शादी नहीं हुई. Okay, she is unmarried. And yeah, Mrs. Hurst, Bingley's elder sister, she is just as arrogant as Carolyn. So she is also arrogant. She is also just like Carolyn. And ये elder one है and she is married. Okay. Now Darcy, Mr. Darcy, his full name is Mr. Fitzwilliam Darcy. So basically he is the protagonist of the story. जो पूरी story है like the whole novel revolves around Mr. Fitzwilliam Darcy and Elizabeth Bannett. Okay, so basically he is the protagonist of the story. Now who he is an extremely wealthy aristocrat and a good friend of Mr. Bingley. Okay, now see Mr. Fitzwilliam Darcy की भी एक sister होती हैं जिनका नाम होता है Georgiana Darcy. Okay, who she is Darcy's sister. Now और भी सारे characters हैं, let's see them. Charlotte, who's Charlotte? Now Charlotte is Elizabeth's best friend and Bennett's never. ओके, ये एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है एंड बैनेट्स फैमिली की नेवर है. आपको आगे पता चलेगा समरी में इनका क्या रोल है इस नॉवल में. ओके, नाउ मिसेस एंड मिस्टर गार्डनर. ओके, सो हु आर दे? मिसेस गार्डनर इज़ मिसेस बैनेट्स सिस्टर इन लॉ एंड मिस्टर गार्डनर इज़ एलिजाबेथ्स मैटरनल अंकल. ओके, नाउ सी हियर लेडी कैथरीन. नाउ हु इज़ लेडी कैथरीन? लेडी कैथरीन इज़ Lady Catherine de Bourgh is Darcy's aristocrat aunt and Mr. Colin's patrons. Now, who's Mr. Colin? Now, Mr. Colin is male heir of Mr. and Mrs. Bannett's family. Basically, what does it mean? क्योंकि Mr. and Mrs. Bannett को कोई लड़का नहीं है, so उनकी सिर्फ 5 daughters हैं. So, Colin is the one जो उनके बाद उनकी properties के legal heir होंगे. Okay. ओके, एंड रहते ये कहाँ पे हैं? लेडी कैथरीन के यहाँ पे रहते हैं जिन्होंने इनको कहीं का डीन भी बना दिया. नाउ योर लास्ट कैरेक्टर्स इज जॉर्ज विकम. नाउ हु इज जॉर्ज विकम? नाउ जॉर्ज विकम इज़ अ लोकल मिलिट्री ऑफिसर एंड इनकी इंट्रो जो है नॉवल में बहुत ही एक हीरो की तरह होती है, बट देन लास्ट में पता चलता है दैट ही इज़ द विलन. ओके,
सो या ये थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपको ये समरी समझने के लिए प्राइड एंड प्रेजुडिस की।